Bhopal, ville d'1,5 million d'habitants au cœur de l'Inde. C'est la ville des lacs. Mais c'est aussi le théâtre de la plus grave catastrophe industrielle de tous les temps. Dans la nuit du 2 au 3 décembre 1984, un énorme nuage de gaz toxique s'échappe d'un réservoir de l'usine de pesticides de la Union Carbide. Les enfants meurent devant moi et je ne peux rien faire. Nous traitons juste les symptômes, nous les soulageons, mais nous ne pouvons pas les aider vraiment. 500 000 personnes affectées temporairement, 100 000 d'une façon permanente. On ne sait même pas combien de morts pleurés, de 3 000 à 5 000 morts la nuit même. 25 ans plus tard, la ville et ses habitants en portent encore les cicatrices. I did not see what actually happened that night. I did not see bodies on the streets. I did not see people were tearing, foaming with their mouths and all. So I was lucky. The disaster in Bhopal is still on. That there are not one but two disasters that are ongoing. One caused by Union Carbide's toxic gases, and that the other caused by the hazardous waste. I did not lose my parents. I did not lose my siblings. They were killed. They were killed by a company. 1984 के हादसे में एक तो मौतों का सिलसिला अभी तक जो चल रहा है, दूसरा जो कंपनी ने वहाँ पे जहर छोड़ा है कंपनी के अंदर, वो पानी के अंदर मिलकर पूरी 14 से 18 बस्तियाँ जो हैं उसमें वो पानी जहरीला हो गया है और वो पानी पीने से रोज़ लोग मौत के करीब जा रहे हैं. ये सबसे ज़्यादा खतरनाक हादसा है. The company refuses to face trial in court and yet blames an unnamed worker, and it continues to do that with the support of the United States government that is not extraditing the corporation. And the company refuses to clean up the toxic waste. I'm talking about the Dow Chemical Company, refuses to clean up the toxic waste and pay for the health injuries, the birth defects, the damages that it has caused. Union Carbide, qui a été acheté par Dow Chemical en 2001, continue de prétendre que le désastre a été provoqué par un acte de sabotage d'un mystérieux travailleur mécontent. Totaram Chouan était un travailleur de l'usine. Après le désastre, pendant des années, il a interrogé ses anciens collègues, il a accumulé des caisses de documents. Même sans moyens, il a rédigé un livre de ses conclusions. Pour lui, c'est clair, c'était une catastrophe annoncée dès les débuts de l'usine en 1969. Sur les lieux de son ancien travail, M. Chouan dénonce vivement la théorie du sabotage. As a worker, when I came to know this thing, because of a disgruntled worker did all these things, so then I take all the evidence related to the disaster. And when I saw all these things, so it is very well planned by the management. It is sabotage, but not by any worker. It is sabotage by the management, higher person, those who made decision to build this plant by unproven technology. He is responsible, not worker. Higher management is responsible. It is really sabotage by the higher management. Ce ne sont pas seulement les conclusions de M. Chouan. D'autres études indépendantes ont aussi démontré que l'usine avait été mal conçue et comportait des failles importantes. La quantité de produits chimiques entreposés était beaucoup trop grande. La formation des travailleurs était insuffisante. Et pour des raisons d'économie, certains systèmes de détection et de traitement des fuites étaient inexistants ou inopérants. We are told that it is on the basis of advanced technology and it is most modern plant. When actually started work, so we saw so many problems in the process, in the safety equipment, in the pollution. So since beginning, these plants are making problem. So
through union we started raising this problem. We wrote letters to the state government, to the central government, to Union Carbide India Limited. So in 1981, in the end of the 81, there was one phosgene gas leak in MIC plant, and because of the phosgene exposure, our one worker died, and we started to tell the poor people that you must support us to fight with the management, with the company, because your safety is also related to this plant. But we didn't got support from the public. They thought that workers might want to gain something from the management, so we didn't got support. L'usine était au cœur d'une zone densément peuplée. Depuis les débuts de la Union Carbide à Bhopal, des centaines de tonnes de déchets chimiques étaient jetés autour de l'usine. Et en 84, c'est la tragédie. Un réservoir laisse échapper du MIC qui sert à fabriquer un pesticide. En 98, 14 ans plus tard, Union Carbide remet le bail au gouvernement de l'État du Madhya Pradesh. They cancel the lease. They hand over all this plant to the government and they left. So all the toxic waste is still lying. It is the responsibility of Union Carbide Corporation because they are still making MIC. They know how to treat all this contaminated land for free, clean environment, but they did nothing. Selon diverses estimations, au moins 20 000 personnes sont mortes depuis 1984 des conséquences de l'exposition aux gaz toxiques ou de la consommation de l'eau contaminée. Des dizaines de milliers d'autres sont aux prises avec des problèmes respiratoires, gynécologiques, des cancers, des maladies des yeux ou du système immunitaire. Satina Sarangi, avec d'autres militants, a mis sur pied la clinique Sambhavna. Des milliers de survivants la fréquentent pour obtenir des soins qui conjuguent la médecine occidentale et la médecine traditionnelle indienne. Satina déplore qu'Union Carbide retienne l'information des effets de ces gaz toxiques sur l'organisme humain. The company has this information by research, but yet it is hiding, and that is affecting the treatment of the people. It is prolonging their suffering and causing many preventable deaths. This is today. And that not only was it an industrial disaster, it's also a judicial disaster, that people are still being denied justice, that people who have lost their friends and family and are dying themselves are still the people responsible for it, the individuals and agencies responsible for it are still unpunished, and they go scot-free. And this should not be allowed, because this is encouraging other corporations to do the same thing. And overall, the corporation is following a policy of double standards, what we call environmental racism, by when Dow Chemical accepts liabilities, legal liabilities in the US, Union Carbide's liabilities, but refuses to accept those liabilities in Bhopal. Certains survivants ont obtenu environ 500 $ américains pour chaque membre décédé de leur famille. D'autres n'ont rien eu. Les citoyens se sont mobilisés et continuent la lutte devant les cours de justice et dans la rue. L'Association des résidents d'un des quartiers près de l'usine se rencontre régulièrement pour organiser des actions de protestation. सबसे बड़ा काम ये किया डाउ कंपनी ने कि यूनियन कार्बाइड को खरीद लिया, और अगर उसको खरीदा था तो उसको ये पूछना था यूनियन कार्बाइड को कि भोपाल के लोगों का कुछ कर्जा तो बाकी नहीं है। हमारा थोड़ा छोटा सा मोहल्ला था, छोटा सा मोहल्ले में 222 मकान थे, फैमिलियाँ रहती थी 222, उसमें से 67 लोग उसी दिन 3 तारीख की रात में सुबह ख़त्म होगा 4 बजे से। और वहाँ पर जानवर थे, डेयरियाँ थी, भैंसें मरी, ये सब्ज़ी के पेड़ थे, सब्ज़ी के बगीचे थे, वो ख़राब हुई, और पानी के कुएँ थे वो ख़राब हुए, बिल्कुल काला पानी हो गया। जब तक भोपाल के गैस पीड़ितों को और उसी यूनियन कार्बाइड का मुद्दा है पानी पीड़ितों को, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हम यूं ही लड़ते चले जाएंगे, और आने वाली पीढ़ी
भी इतनी होशियार हो जाएगी कि वो अपने हकों के लिए लड़ती रहेगी। Au fil des ans, plusieurs victimes se sont transformées en activistes, capables de se lever contre une des plus puissantes compagnies de l'industrie chimique, Dow Chemical. A victim is a person who has given up, who just sees herself or himself as someone who has been exploited or done wrong to, but it does not have the sense and the spirit of what is there. We believe in every human being that whatever be the odds, we can still rise up to it and we can still confront it and we can still sing and play and dance to the music of the human spirit, which is at the end of the day is survival against the greatest of odds, which is what we owe evolution to. Ce qui est le plus effrayant, c'est que les nouvelles générations subissent aussi les terribles conséquences de 84. Encore maintenant, des enfants naissent avec des désordres génétiques, des retards mentaux, des malformations. Rachida et Champa Devi ont créé Shingari Trust. C'est un centre de réhabilitation qui offre des services de physiothérapie, d'audiologie et d'éducation spécialisée à une centaine d'enfants handicapés. क्योंकि भोपाल की लड़ाई आज 25 साल बीतने के बाद भी हम लोगों का जोश ख़त्म नहीं हुआ है, हम लोग लड़ रहे हैं। तो हम ये मानते हैं कि हम फूल नहीं चिंगारी हैं, हम भोपाल की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं। और चिंगारी ट्रस्ट एक जो वो फ्लेम है, हम चाहते हैं एक दिन शोला बन जाए और यहाँ से बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले। Rachida et Champa Devi ont été affectés par le gaz et certains membres de leur famille sont décédés. Après la catastrophe, elles ont commencé à militer pour les droits des survivants. Leur implication exceptionnelle leur a valu le prestigieux prix Goldman et 125 000 $ américains qu'elles ont utilisés pour mettre sur pied Shingari Trust. बीमार हैं और तकलीफ से गुजरते हुए भी अपनी हिम्मत को नहीं हारा है और हमारी लड़ाई की वजह से सारी दुनिया इन कंपनियों के कारनामे को समझी है कि ये किस तरह से जहर बनाते हैं और कैसे छुपा के इंसान की ज़िंदगी से और पर्यावरण से खिलवाड़ करते हैं। वो चीज़ सामने आई है, ये बहुत बड़ी बात है। हम तो मरे हैं लेकिन दुनिया को बचाने के लिए हमारी लड़ाई जारी है और 25 साल के बाद भी आज हमारी लड़ाई पूरी ताकत के साथ ज़िंदा हुई है। पूरी दुनिया इस चीज़ को समझी है और जो विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी एक उदाहरण बने हैं दुनिया का कि ये इस तरह की पीढ़ी आने वाली है, इसको रोकना है। Sanjay Kumar Verma a eu la vie sauve parce que sa sœur a fui en l'emportant dans ses bras. Son père, sa mère et 5 de ses frères et sœurs sont morts dans cette nuit tragique du 2 au 3 décembre 84. I was 6 months old when the disaster occurred, and so whatever I know, I came to know about the disaster from my sister and brother, the 2 other survivors from my family, and also because of the people I've been working with. As I said, I was living in one of the exposed communities that time, right across the street to the factory, and we were like 10 members in our family. 7 of them died that night, and then we moved to an orphanage in Bhopal, I and my sister, but my brother didn't come with us. He wanted to keep the fight on for the justice for the people of Bhopal. So he didn't come with us to the orphanage, and then I started my education in the orphanage, and I'm still studying. I've noticed that even the governments, even the companies, they just care for money. They do not care for people. All they want is money, money and money. Corporations, companies doing their business, like they are
they are poisoning the world. They have not just poisoned the Bhopal. They are still poisoning the world. So people should learn from the accident of Bhopal, and they should stop such kind of things which can be happen in future in their countries. So they should stop before it happens, because people of Bhopal, as I said, they were innocent. They knew nothing about the factory, what they were manufacturing. So our fight is not to get justice for Bhopal only. Our fight is to stop other Bhopals in the world also. That if justice is denied in Bhopal, the world is that much unsafe. Workers are that much unsafe. Communities are that much unsafe. And so it's a common struggle that needs to be won. People here are so strong. They've been fighting for almost 25 years. And we'll keep fighting until we get proper justice, which is still to be done in Bhopal.